of this independent nation. And I guess freedom of life to all in our ways. Now, not forgetting about the brave freedom fighters who gave their lives for the independence of this mighty constitution. We all salute these great men for the great sacrifice towards this nation. So, to start this auspicious day, I would like to welcome our principal, Reverend Father Major Murzello, and our manager, Reverend Father Clarence Fonseca. Now we have Swaya with a bouquet of appreciation. Now we'll have Harsh. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। I request Swaya to say a few words about the 74th Independence Day. A very warm good morning to Reverend Father Principal, respected teachers, and my fellow Angels. Today we are gathered here to celebrate the 74th Independence Day of our country. As we all know, that Independence Day is an auspicious occasion for all of us, and it is celebrated with great spirit of patriotism all over the country. Furthermore, on this day, we forget all our differences and unite as one true nation should. India got independence on 15th of August 1947. It is the day they got freedom from the British rule after many years of hard struggle by our forefathers. We all should feel proud to be an Indian, admire our fortune that we took birth in the land of an independent India. Today, our country is free in almost all the fields such as education, transportation, business, sports, etc. Before 1947, people were not so free. Even they were restricted to have rights on their own body and mind. Today, India is a well-established democratic country all over the world. India is a country which is rich in nuclear power. Today, our country and the whole world is fighting the deadly global pandemic COVID-19, which has caused a serious strain on the global economy and has taken several lives across the globe. We, as responsible citizens,
can ensure to make every effort from our end and follow the government's directive in order to curb the disease. We, as responsible citizens, can ensure to stay at home and not move outdoors. It is extremely essential. Wear a mask while moving outdoors. Wash your hands frequently with soap and water. Support the COVID-19 warriors who are risking their lives in order to curb the disease. Seek medical attention promptly by not keeping well. Today, we are proud that India is lending a helping hand to the neighboring countries. India recently released a COVID-19 emergency fund and donated 10 billion US dollars to be utilized by the SAARC countries. India also exported a large consignment of 35.8 lakh tablets of hydroxychloroquine to the United States at the request of the President. This is indeed a wonderful gesture by India. This shows the true spirit of a powerful nation. Jai Hind. Now we have a small performance by our Hungarian dancers. जीवन आपले साथ करारे राष्ट्रभक्ती विश्वास करारे एकजुटीने कार्य करा या देशाचे यासाठी बना आणि साथ करारे मातृभूमी ही आज पुकारे जागृत होऊन कंकण बांधू दिवस रात्र झटण्याचे मातीच्या पायाशी हे अर्पण प्राणाचे फेडूया ऋण आम्हा हा जन्म लाभला त्याचे घेऊ हे हृदयाती सिंधू नव हिंदुस्थानाचे भीतीन आम्हा ह्या वज्रमुखी मी गातळ भेदू सीमा न कुठली हुंकार असा गगनाला भेदू ठाम निश्चय हा दुर्दम्य आमची इच्छाशक्ती हृदय पोलादी ना सोडी कधी राष्ट्रभक्ती मातीच्या पायाशी हे अर्पण प्राणाचे घेऊया ऋण आम्हा हा जन्म लाभला त्याचे घेऊ हे विधाती असे तू सिंधू नव हिंदुस्थानाचे होसी मोटी पुत कहोने दुश्मन दी बादल घूमने होसी मोटी पुत कहोने दुश्मन दी बादल घूमने भारत माने जाए साडे जिगरे ही सरमाए होसी भारत माने जाए साडे जिगरे ही सरमाए साडी शान तरंगे ओ साडी शान तरंगे दी मित्रो सब जिंद जान को प्यारी दुनिया दे हर एक झंडे पे सदा एक तिरंगा भारी दुनिया दे हर एक झंडे पे सदा एक तिरंगा भारी दुनिया दे हर एक झंडे पे ఇంతకన్నా మంచి పోలికేది నాకు తట్టలేదు గాని అమ్మో ఈ లవ్ అనేది బబ్లు గమ్ము అంటుకున్నదంటే పోదు నమ్ము ముందు నుంచి అందరన్న మాటే గాని మళ్ళీ అంటున్నానే అమ్మో ఇది చెప్పకుండా వచ్చేతుమ్ము ప్రేమ నా పలేము నన్ను నమ్ము ఎంతగానే ఎదురు చూపుకి తగినట్టుగా నువ్వు బదులు చెబితివే అరి దేవుడా దేగనికలో పటే పిల్లడాంట దగ్గరై నన్ను చేరదీస్తివే బుట్టబొమ్మ నన్ను చుట్టుకుంటివే సిన్నడిగా అడ్డబొమ్మై జంట కట్టుకుంటివే బుట్టబొమ్మ నన్ను చుట్టుకుంటివే సిన్నడిగా అడ్డబొమ్మై జంట కట్టు
बाजे शहनाई शहनाई की माला हमें पिरोना है अपना बोझ मिलके साथी हमको ढोना है शहनाई 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 सजलो साज सजिलो शिवगडी जयावी आजा आजा टमटमाता शिवनाम जयावी नशा है जिंदगी नशा है जिंदगी तेरे Mitti ka दूं मैं फिर
तीन रंगों का ये झंडा अपने देश की शान है, होने ना दे इसका तू अपमान, तेरी वीरता का बलिदान है। तू है महान, तुझे दिल से सलाम, तुझे दिल से सलाम, तुझे दिल से सलाम। Anas will now lead us with a speech. शुभ प्रभात। मेरे पाठशाला के प्रधान अध्यापक, शिक्षकगण, अभिभावक और मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे, ऐसी मेरी आशा। हम अपने देश में बड़े पैमाने पर स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। साथ ही हर सरकारी इमारत पर तिरंगा लहराया जाता है। साथ ही स्कूल और कॉलेजेस में भी इसके बड़े कार्यक्रम होते हैं। इसके अलावा हम स्वतंत्रता दिवस अंग्रेजों से आजादी मिलने की खुशी और जो स्वतंत्रता सैनिक उसमें बलिदान दिए हैं उनकी श्रद्धांजलि के लिए बनाते हैं। इस दिन हमारे देश के सभी नागरिक उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, हर जगह तिरंगा लहराते और हमारा राष्ट्रीय गीत गाते हैं। ये हमारे प्रति, हमारे देश के प्रति हमारी भावना और प्रेम दिखाता है। लेकिन इस साल कोविड-19 की वजह से हम सब तो हमारे घर में कैद हैं और देश में लॉकडाउन लगा है। पूरा देश अपने घर में बैठा है, सिर्फ राशन लेने ले जाने के लिए बाहर निकल सकते हैं। तो हम इस साल स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाएंगे? कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से तो हम बाहर भी नहीं निकल सकते और उसके पेशेंट तो तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में हम सबको हार नहीं मानना चाहिए। हम स्वतंत्रता दिवस ये साल ऑनलाइन मनाएंगे। तो उसके पेशेंट तेजी से भले ही बढ़ने दो, यहाँ कम वहाँ ज्यादा, लेकिन हम लाचार जरूर हैं, पर टूटे नहीं हैं। हिम्मत बहुत है। हर हॉस्पिटल कोविड के पेशेंट से भरा हुआ है। हम अपने देश को फिर से इस कोरोना वायरस से आजाद बनाएं। हमारे आजाद देश को फिर से आजाद बनाएं। जितने भी लोगों की जान इस कोरोना की वजह से गई है उसका बदला हमें लेना। न जाने कितने लोग बेघर हो गए हैं और कितने तो पैदल ही निकल चुके हैं अपने गांव, परिवार, घर के पास जाने के लिए। उन सबके बलिदान को हम नहीं भूल सकते। हम हमारे देश से बहुत प्यार करते हैं। हर न्यूज चैनल पर उसी की खबर चलती है, कोरोना ये, कोरोना वो, यहाँ पर इतने पेशेंट्स, वहाँ पर इतने पॉजिटिव। लेकिन हमें पता है कि आगे दिन अच्छे आने वाले हैं। लॉकडाउन की वजह से सारी फैक्ट्रीज, गाड़ियां सब बंद है, तो पोल्यूशन नहीं है। आसमान, समंदर सब एकदम साफ है। हवा एकदम अच्छी और स्वच्छ है। जल्द ही लॉकडाउन भी खुल जाएगा और कोरोना भी भाग जाएगा। लेकिन ये सब हमारी एकता की वजह से। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, कोरोना से मत डरो ना। जितने भी कोरोना वॉरियर्स है, मैं उन सबको सलाम देता हूँ। वो हमारे लिए महीनों से अपने घर नहीं गए। हमारी सेफ्टी के लिए वो महीनों से अपने घर नहीं गए। उन लोगों ने तो दुनिया जीत ली। मैं सोच रहा था अगर वो नहीं होते तो हम क्या करते। इसलिए उन सबको सलाम। जय हिंद। Now Kartavya will lead us with the song. Thank you.
we have Pratyush for a poetry on our great Corona warriors. कोरोना के कर्मवीर, नमन हमारा उन वीरों को जो देश के हित में लड़ते रहे, औरों की रक्षा के खातिर खुद खतरे से भिड़ते रहे। जब सारा देश रुका हुआ था, वो कर्मवीर कभी रुके नहीं। त्याग समर्पण की भावना से वो निरंतर चलते रहे। नमन हमारा उन वीरों को जो बाधाओं से न विचलित हुए। संकट में संकट मोचन बनकर वो डटकर आगे बढ़ते रहे। हम सम्मान में फूल बिछाए और प्रेम भावना के दीप जलाए। इन कर्मवीरों के जज्बों पर आओ कोटि कोटि आभार जताए, कोटि कोटि आभार जताए। जय हिंद। For a tribute towards our Corona warriors, we will now have a song. नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी वो फूलों सी बाहें भूल गए। जब देश ने दी आवाज हमें, हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, ए जाने वतन सो चांद बुझे। हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। मजबूर हुई जब दिल की दीवार तो हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर थामने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे न कभी ये भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी, अब उसका रंग सफेद हुआ। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू।
So, to bring an end to this program, I request Reverend Father Clarence Fonseca and Father Major to say a few words. Reverend Father Principal, members of the staff, and my dear students and friends. This 74th Day of Independence, we thank God for giving us independence and for giving us a country, all that we have, and all the blessings that we continue to shower on us. As we recollect the first day of our independence, we are aware that all our leaders who fought for our independence fought with courage, determination, and always continued to really work for the betterment of our country. And today, seeing the situation all over the world and in our own country, we as citizens need to wake up to the call of God that we in turn may really work in courage, work for determination, and also work for the good of all our people. We also have the feast of Our Lady of Assumption today. It reminds us that Our Lady also worked in determination, worked with courage, and always did the will of God. And so today, as we celebrate Independence Day, and we thank God for giving us our country, giving us our life, giving us the air we breathe, we need to see that we need to have courage to really work for the betterment of all our country, for all our countrymen, especially trying to lift up the poor who are really downtrodden and unable to really face life. And as we ourselves are aware that this year we are celebrating Independence Day in a different manner, we need to work in our own homes, work that God will continue to bless us, and through the help of Our Lady's blessings and prayers, we will be able to continue to live our life in love, live our life accepting God, that God is our creator, that God continues to shower his blessings on us, and that we need to work for the love of all mankind. So a happy Independence Day to all of you. Good morning, parents, teachers, parishioners, and students, and all our well-wishers. Happy Independence Day and happy feast. I'm very proud to be here to thank all our parents who have been on the front line, warriors, COVID warriors. And I'm very happy to see that we have appreciated their work. But many of you may not know that many of our parents have helped students who are poor, who could not have food aid. They went out and reached to them, especially in the first month of the lockdown, when restrictions are very high. The parents somehow managed to get stuff and give it to parents who. So it was a very nice thing. I want to thank these parents who went out of their way to make sure that the poor families and poor students got food. I would also want to say that at the same time, St. Andrew's Church was doing a great service and is still doing today, giving out food requirements to people who need them. You must be not aware that our campus also was available on the second day of the lockdown itself. The medical staff of Holy Family Hospital was staying here. The entire conference hall was taken by them. We also offered our classrooms to the police jawans, the armed police. We had offered them our facilities. So we've been offering our campus to many organizations who need our support. And I would like to say thank you. I'd like to say thank you to our teachers. It's very difficult to do remote teaching. And yet, being new to this whole system that has come in now, in-person teaching is not possible right now, but they have very bravely started teaching. Today, I'm very proud of all these students and those who have helped us today to put up this live program. Those who have sent recordings at home, I have to say a very big thank you. Today's event is very possible because a lot of people came together, a lot of parents came together and put in their resources and made sure that we're proud to be Indians.
this day we celebrate Independence Day, we also celebrate our dependence on God. This pandemic doesn't take away our faith, it makes our faith strong. We believe that we will breathe freely. We believe that we will overcome this pandemic. Let us keep that faith. Jai Hind. God bless. At last, I wish all of you a very happy Independence Day and hope for building a beautiful nation together. Jai Hind.